है ना? I think we have completed Yes, sir. everything regarding SN, and we have also seen one hydride shift, methyl shift, ring expansion, all of these things. Okay. So next, we'll give you some questions. Try to do those questions, and then we are going to move forward. Please write a question. These questions will be containing everything from the method of preparation till nucleophilic substitution reaction that we have seen till now. Okay, please write the. You can flip your pages. You can see in your notebook. Okay, I will give you time also. आराम से कीजिएगा, but don't rush to any answer if you are not very sure about it. Okay, write the major products for following. Write the major products for following. Number one, you will write uh, 10 minutes would be enough. Tell me, guys. Harsha and Rishita. Yes, sir. Yes.
Sir, I've sent. Just give me a second. Yes, the first one is right, second one is right, third one safe, fourth one is fine, fifth is correct, sixth is also correct, seventh is also correct. Very good. This is fine, Rishita. Send the rest of them. I sent, sir. Skip. Third one is not right. Second one is fine. Fourth one, fine. Fifth one, fine. 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 Yes, very good. Third में देख लीजिए. It is light, है ना? We have HBr and light. So in the presence of light, it will be having a, we will be using the peroxide mechanism, and we will get radicals. And when we get radicals, here we are having two carbon atoms. The red carbon, sorry, the blue carbon and the red carbon. The blue carbon is having 0 hydrogen, and the red carbon is going to have 1 hydrogen. So in peroxide effect, anti-Markovnikov addition, in that what happens? The negative part, H is positive, Br is negative part because Br is more electronegative, right? The negative part of the reagent and Br joins or attaches to that carbon atom which is having more number of hydrogens. So let me write the answers here. The first one is correct. Here you will have Cl. Second, you got it, Rishita? Yes, sir. Here you will have Br. This was correct, by the way. This is something that you should remember. Okay. Next is, this will be everything is as it is. Remove the double bond and then attach Br on carbon, which is having more number of hydrogen. Here you just need to replace Br with I. What reaction is this? This is the name reaction to me. What name reaction is this? Okay. What name reaction is this? Fourth It, one. It's what? Finkelstein reaction. yes. Finkelstein reaction. Okay, you have to remember the name reactions also. Name reactions directly, those are asked in your normal exams, boards also, and in your competitive examinations also. They are not, I mean, directly pushed with them. Next, we are going to learn today, that is very important, elimination reaction. Elimination reaction. Please write this with me, and then I will explain. Okay. Please write the reaction in which atoms or group of atoms of substrate are removed from adjacent carbons in presence of a base to form unsaturated compound called
elimination reaction. यहाँ पे क्या होगा? You will have carbon, single bond carbon. ठीक है? So you have to take adjacent. Now there will be some other groups that is attached to some other carbon atoms. Those will be there, but we are only focusing on the area where we are having reaction. So let us suppose we have X here. Let us suppose we have Y here. So what will happen? Both of these will be eliminated. So this will be removed from. Now one carbon atom, it is losing a bond. The other carbon atom, it is also losing a bond. So they will have a double bond in between them. And you will generally क्या होता है फिर X and Y, they are acting as a leaving. Generally this happens, you get X, XY, but it is not what I can say. Not always it is not the case, but generally this happens. Okay. So this is a generic introduction to what elimination reaction. Now, there are a few elimination reactions that we have to learn in this particular class that is present standard. A few examples I'm writing. Examples of elimination reaction. क्योंकि हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है बिल्कुल इस क्लास में. The first one is dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. So you can see from the name itself that hydro, that means hydrogen, and halogen will be removed. That means HX is removed. We'll be removing hydrogen from one atom and halogen from the adjacent atom. Second that we have to learn is dehalogenation. In this, we have to remove two halogens. Halogen from the adjacent carbons. There will be halogen in this XC also, and the next one also will be having halogen. X2 is removed. And the third is which we are going to learn in the next chapter, that is dehydration. In dehydration, what happens? Water is removed from the overall molecule. But if I look at the carbon atom specifically, one of the carbon atoms will be having OH. The adjacent carbon atom will be having hydrogen. And we will be removing OH and H, that means H2O from the molecule. So H2O is removed in dehydration. Dehydration we are going to learn in the next class. You'll write a note also here. Generally, heat is required. Generally, heat is required during elimination method. Elimination reactions. Linear pair में चलेगा. Pair of linear equation in two variables. उसमें एक होता है ना elimination method. Is that no? Yes. Yes, sir. वहाँ चलेगा. During elimination reaction. Done writing yes or no, please tell me. Tell here. Yes, sir. ठीक है. अब हम लोग टॉपिक लिखेंगे dehydrohalogenation. That's the first thing that we have to do. Dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. Now you'll write here. When alkyl halide reacts with alcoholic KOH. Alcoholic KOH means the solvent will be alcohol. Okay, alcoholic KOH in presence of इसमें ना presence of heat छोड़ देते हैं हम. ठीक है. Sorry, because sometimes in the NCERT they have not shown heat. Alcoholic KOH, then it undergoes elimination bracket with dehydrohalogenation and forms corresponding alkene. ठीक है.
So in elimination reaction, you are always going to get what? You're always going to get alkenes. Basically, यहाँ पे क्या होगा? You will have carbon. There will be some things attached here. In this another carbon, there will be 3 bonds more. ठीक है? So let us suppose this carbon atom it is having यहाँ पे आपके मान there is some halogen atom here, X. और यहाँ पे आपके पास क्या है? Here you are having hydrogen atom. So the carbon which is directly connected to a halogen atom, that will be the alpha carbon, and the carbon that is adjacent to the alpha carbon will be the beta carbon. Now what is going to happen here? You are going to remove halogen from the alpha and hydrogen from the beta. So you will have carbon, the 2 bonds as it is, whatever will be present now. The unreacted part will be as it is, double bond, carbon, double bond. Plus you will get HX. ठीक है? By the way, arrow थोड़ा बड़ा करके I have to write here alcoholic KOH, and this requires a bit of heat, लेकिन NCERT avoid करता है जनरली. Avoid क्या करता है? मतलब वो लिख, I mean NCERT does not shows it explicitly. By the way, Rishita, am I audible? Yes, sir. जी, आपके स्कूल में कहाँ तक हुआ है हेलो के हेलो की? Sir, I think method of preparation of haloarenes. अच्छा, chemical properties have not been started. No, sir. There is one thing that I'm telling you right now itself is that when they will start chemical properties, they will do nucleophilic substitution. Then there they might teach you chiral carbon, asymmetric carbon chirality. These words will be coming in the class, ठीक है ना? So you will feel like सर ने तो ऐसे पढ़ा दिया लेकिन ये पढ़ाया नहीं. That topic chirality वगैरह that I will teach at the end of the chapter. Okay, I don't teach it like just after SN. Then you will understand it more. Okay, Rishita? Yes, sir. And we're not, we finished physical properties and now we're in the density and the solubility part. जो physical properties में ही है मतलब अभी ना. Yes, sir. ठीक है. Actually, so for example, if I have, just take example number 1. For example, if I have CH3, CH2, Br, and you have been given alcoholic KOH, what you will get? CH2, double bond, CH2. From the alpha carbon, you will remove the bromine. From the beta carbon, what you are going to remove? You are going to remove hydrogen. So if you remove one hydrogen, you will get CH2. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes. Example number 2, PC. So let us suppose you have, so let me take this will be the question. You have bromine here is CH3, and this is also what? This is also CH3. Now this is your alpha carbon. Now the beta, there are 2 beta carbons. The adjacent to alpha carbon is this beta number 1, and this is beta number 2. But both the beta carbon are same. Does that make sense? Recently? Yes, sir. Both the beta carbon are same, so you can remove hydrogen from any one of them. Okay? Remove from any one of them, and you will get what? Propene. Make sense? Yes, recently? Yes. Yes, sir. Similarly, if you have, let us So suppose what Br if here. beta 1 and beta 2 are different? हाँ वो आएगा ना, अभी आएगा. अभी पहले जो वहाँ पे सेम है ना उसको कर रहे हैं. I just want you to like remove the alpha carbon, remove the bromine or remove the halogen from alpha carbon, and then beta carbon hydrogen remove करके double bond अभी आप practice कीजिए. उसके बाद we will see what will happen if the beta carbons are not same. ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास मिला alpha, ये आपके पास beta 1, ये आपके पास beta 2. In this case, you have removed from alpha, किसी एक के साथ आप double bond बना दीजिए, बन जाएगा. ठीक है? Similarly, example number 4.
ठीक है, चलिए, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, डू दिस. तीन एग्जांपल कीजिए. All of these are what not symmetrical, but all the beta carbons in these cases will be same. Once you're done, send the answers. It's very good, Harsha. Correct. Waiting for you, Rishita. अरे ऋषिता, आप यार स्ट्रक्चर सही से नहीं बनाते हैं ऋषिता. एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, क्या है? देखिए कितने कार्बन हैं. Two beta carbons are two, right, sir? अरे बीटा छोड़ो भाई, वो रिंग में कितने Oh, कार्बन है? हाँ, मैंने हेक्सेन ड्रॉ किया है. आपको जो आसान लगता है वही बना देते हैं, है ना? नहीं सर, आई एम यूज्ड टू हेक्सेन एवरीवेयर. हाँ, तो वही तो यूर यूज, वही तो आसान लगता है आपको, तभी तो. चलिए अब देखिए जरा, दो चीज ना साथ साथ हम आप लोग को बताते हैं, लाइक व्हाट विल हैपन इफ वी हैव डिफरेंट बीटा कार्बन्स. ठीक है, वी आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स राइट नाउ. इसमें हैव डबल बॉन्ड here, इसमें विल हैव डबल बॉन्ड here. CH3 कार्बन रिमूव फ्रॉम एनी वन ऑफ द कार्बन एटम्स, CH2. और फिर मतलब थोड़ा सा स्पेस की वजह से CH3 आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो इससे घबराइएगा मत. ठीक है, कि बी आर था CH3 था सर्किट, इट्स जस्ट दैट वी हैव showing it differently. ठीक है, now please write a note. When there are more than one beta carbons, then two products are formed. टू और मोर भी हो सकता है, अगर आपके पास 3 बीटा कार्बन हो गए तो वो उसमें 3 हो जाए. देन मल्टीपल लिख दीजिए, टू मत लिखिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर.
The major product is determined by Setzeff rule. The major product is determined by Setzeff rule. Okay. What is Setzeff rule? Setzeff rule का कहना रहता है कि in during elimination you will remove hydrogen from that carbon which bears less number of hydrogens. ठीक है. It states hydrogen is removed from that carbon. देखिए हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है उस पर तो कोई पंगा है नहीं. फ्रॉम दैट बीटा कार्बन कर देते हैं विच बियर्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है जहां पे कम हाइड्रोजन हो वहीं से. एज अ रिजल्ट व्हाट यू विल फॉर्म अ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. ठीक है. शॉर्ट में in elimination reaction more substituted alkene is major product. ठीक है. सब समझा देंगे जब एग्जांपल करेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा सब कुछ. लेट मी नो इफ यू आर डन राइटिंग. Harsha is done. Rishita. Rishita is also done. ठीक है. कहाँ तक कितने एग्जांपल कराया उन्होंने? 6. राइट एग्जांपल नंबर 7. ठीक है. ध्यान से देखिएगा है. यहीं पे आप समझिए उसके बाद फिर आपको खुद से कीजिएगा. ठीक है. नाउ डोंट राइट एनीथिंग. ठीक है. डोंट राइट एनीथिंग. आई हैव 1 2 3 4. ठीक है. इन द चैट आप लोग बस 1 2 3 4 में से कोई एक नंबर लिखिएगा. व्हाट इज द अल्फा कार्बन? राइट इन द चैट. व्हाट इज द अल्फा कार्बन? जूम चैट पे ना, व्हाट्सएप मत करिएगा. ठीक है. वेरी गुड. व्हाट आर द बीटा कार्बन? बीटा कार्बन कौन कौन से? जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, बीटा कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अल्फा कार्बन. ओके रिशिता. यस वेरी गुड. ठीक. फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, and we can now you can turn your mic and tell me both of these beta carbons as you have identified. This is a beta carbon, this is also a beta carbon. These beta carbons are what, same or different? Different. Different ना. एक CH2 है, दूसरा CH3 है. ठीक है. So if we are going to have alcoholic KOH with some heat, then we are going to get two products. One product will be like this, plus other product will be like this. Make sense? ये सुनो एक बार. अल्फा कार्बन और बीटा 1 के बीच में डबल बॉन्ड और एक बार अल्फा बीटा 2 के बीच में डबल बॉन्ड. मेक सेंस? ये सुनो प्लीज टेल मी. Yes, sir. नाउ टेल मी बीटा 1 में कितने हाइड्रोजन थे? हाउ मेनी हाइड्रोजन इन द बीटा 1? 2. 2 हाइड्रोजन. हाउ मेनी हाइड्रोजन इन बीटा 2? 3 हाइड्रोजन है ना. अब बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ए या बी? कहां से हाइड्रोजन निकलना चाहिए? Beta 1. हाँ बीटा 1 से निकलना चाहिए. मेक सेंस हर्षा? ये सुनो. Yes, sir. बीटा 1 से निकलेगा तो दिस विल बी मेजर. ठीक है. यहां तक बोलिए निशिता Yes, हर्षा. sir. Yes. ठीक है. अब एक चीज और सुन लीजिए, रिगार्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन.
ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूट, ध्यान सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज माई एल्कीन, ये सुनो, दिस इज माई एल्कीन where I have bonded the pink one. सही है, Yes, sir. बोलो भाई, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो प्लीज जल्दी. And we have only one alkyl group attached to it. Make sense? I'm not talking about the number of carbons attached to it. I'm talking about the number of alkyl group. Only one. ये ethyl वाला इस पे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes. Yes, Here sir. we have one alkyl group, right? Here we have one alkyl group. In the second case, my double bond is this one, and here I have two alkyl groups. Even though it doesn't matter, ठीक है, कि how many carbon it is having. It is what there are two alkyl groups. So I will say this is more substituted. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. ठीक है, चलिए इसको आराम से बिल्कुल सारी चीजें एक लिखिए. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस. उसमें बिल्कुल देखिए, वन एल्काइल टू एल्काइल तो नहीं करना, बट आई नीड वर्क हियर इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. आई वांट टू सी द वर्क. मेक सेंस रिशिता एंड हर्षा? यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes. ठीक है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू द वर्क, देखिए आप लोग को ना, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू दैट वर्क इन द नोटबुक, बिकॉज ऐसे आप लोग को तो अलग से हम नहीं पढ़ाए ना कि अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन से, बीटा कार्बन में कितना हाइड्रोजन से, तो अलग से प्रैक्टिस भी कराया जाता है. बट सिंस वी आर लर्निंग स्टार्टिंग से लाइक चैप्टर वाइज, so here we have to more focus on haloalkane halorine rather than the basic organic chemistry वाला part, क्योंकि 11th का portion. Even in 11th you don't have to learn too much about beta 1 beta 2 और उसमें how many hydrogens are there. ठीक है, हर एक कार्बन पे. इस वजह से राइट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस इट. ठीक है, तभी जाके गलती नहीं होगी. अभी क्लास में कर लीजिए, आगे गलती नहीं होगी. ठीक है भाई, डोंट गेट लेजी राइट नाउ. अभी प्लीज ऐसे आलस में दिखाइएगा. ठीक है, आई नीड द वर्क टू बी देयर इन द नोट. चलिए अब देखिए, we have something like this. We have CH3, we have iodine here. We are going to heat it. You don't have to focus on cyclic है या फिर क्या है. अल्फा कार्बन, द कार्बन विच इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन, उससे डायरेक्टली बॉन्डेड जितने कार्बन है, डायरेक्टली बॉन्डेड में आपको क्या करना, उंगली से ऐसे करके लेके जाइएगा बॉन्ड. ठीक है ना, यू डोंट हैव टू डू मिस्टेक्स. धीरे धीरे कीजिए, हो जाएगा. ठीक है, राइट द टू प्रोडक्ट्स, राइट द टू प्रोडक्ट्स एंड देन नेचर माइनर लिखना है. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी. अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes. आ रही है ना, ठीक है. बी आर alcoholic KOH, some heat. I hope you have done this example 7, right, Rishita and Harsha? Yes. Yes, sir. चलिए,
By the way, send the answers on my WhatsApp once again. आराम से बिल्कुल ना अल्फा बीटा बीटा वन बीटा टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब कुछ लिख लिख के चलिए आराम से सवाल होते जाएंगे ठीक है ना यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग एज इट इज apart from the halogen atom. Then what you have to do, make a double bond between alpha and beta. Make sense, Rishita and Harsha? Sir, in example Yes. 10, the methyl one, is it also counted as a beta carbon? ठीक है वो आप देखिए अल्फा कार्बन कौन सा है दिस ब्लू वन इज अल्फा Yes, सही sir. अब इस अल्फा से कितने कार्बन कनेक्टेड है ऑल ऑफ देम विल बी बीटा डायरेक्टली कनेक्टेड So we'll have 3 products? अब उसमें ये देखिए आप कि आर दीज टू बीटा सेम और डिफरेंट Ah, yeah, they're the same. ठीक है ना also train your mind to like not think rather write the things ठीक है अगर आप सोचने लगे ना कि पहले ही मतलब लिखने से पहले लाइक बिफोर इवन राइटिंग अल्फा कार्बन देन दिस इज बीटा तब फिर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा अभी आप ट्रेन कीजिए माइंड को कि क्या करना है आपको यू हैव टू राइट फर्स्ट अल्फा इससे करेक्ट ये बीटा ये बीटा ये बीटा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कोई बीटा सेम है क्या उसको देखो ठीक है लाइक
And you can let me know if you are stuck. What should I say? Eighth वाला product देखिए जरा हर्षा. Is there anything missing in the example 8 product? Biology. What? Biology. I can't hear you properly. What are you saying? The CH3. हाँ, correct. CS3. And example 10. अच्छा, you have muted here. अच्छा, ठीक है, fine. Example 11. ठीक है. Okay, example 12 is also fine. ठीक है, just waiting for Rishita. Then I will discuss these. Yes, sir. I'm in the last one. Yeah, sure. Okay. Rishita, just one more minute and send me, okay? Yeah, I received your answer. Yes, the first one is correct. Second one, मेजर माइनर नहीं लिखा आपने एग्जाम्पल नंबर 9 में. कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड? कौन सा मेजर होगा रुचिता एग्जाम्पल 9 में? First, sir. ठीक है. उसके बाद 2 2 3, तो मेजर उधर माइनर उधर. ठीक है. उसमें 1. ठीक है, मेजर हो गया. ठीक है, आपने सब कुछ तो सही किया है. चलिए लेट अस सी. हाँ, लेट अस सी दिस एग्जांपल 8. ठीक है, आई एम मेकिंग द प्रोडक्ट्स. Here we will have iodine हटा देना, CH3 को as it is लिखना है. Then you'll have a double bond here, plus you will get another product which will be like this. The CH3 as it is, and there will be a double bond here. So this will be major. ठीक है, I'm just going to denote the which is going to be the major. यहाँ पे आपके पास everything as it is apart from the halogen atom, और एक और बनेगा आपके पास. So you will have one like this and the other one this here. Then here also same thing, everything as it is apart from the halogen atom. So CH3 will be as it is here.
here this is beta 1 and this is beta 2. This is having 2 hydrogen. This is also having 2 hydrogen. So both of these betas are same. Not because 2 hydrogen, because बाकी सब कुछ भी same है इनका. And this is going to have beta 3 with 3 hydrogens. So right now I have to make this plus. I will have everything as it is, and here I will remove 1 hydrogen, so I will get CH2 like this. In example number 11, I have this is also beta, this is also beta, and this one is also beta. Here I'm going to have 1 hydrogen. Here I'm going to have 2 hydrogen. Here I'm going to have 3 hydrogen. So I will get 3 different products, but the CH3 here, CH3 here, this will be major plus CH3 here, CH3 here, and this will be major में लिखा था major. This will have one more product where it will be like this. ठीक है, so both of these are mine. अब यहाँ पे ना ये थोड़ा सवाल important था, आप लोग दोनों ने यहाँ पे गलती कर दी है, ठीक है, and that mistake was expected. So here, if I look at the carbon atoms, I have, this is my alpha carbon, and I have beta. Let's suppose this is my beta 1. Then I have this as my beta 2, and this carbon as my beta 3. How many hydrogens are there in the beta 1 carbon? 0 hydrogen. 0 hydrogen, right? If there is 0 hydrogen, यहाँ से तो hydrogen निकल ही नहीं सकता है. Make sense? Hydrogen is removed from, है ना, तो वहां से hydrogen निकलेगा ही नहीं. Also, what will happen? Like अगर आपने वो बिना सोचे समझे, अगर आपने product बना दिया ना, so if you see that carbon atom, it is now having 5 bonds. Everything as it is apart from the iodine, CH3. और एक डबल बॉन्ड आपने यहाँ पे बनाया है, right? So now this carbon atom is having 1 bond, 2 bond, 3 bond, 4 bond, 5 bond, which is what incorrect. Make sense? Yes. ठीक है, चलिए हम देखें, कोई बात नहीं. I mean, it was expected वो गलत होना. एक बार में समझ आ गया वही काफी है ना, क्यों गलत है. CH3 CH3. बाय द वे ऐसे सवाल ना मतलब पूछे नहीं जाते हैं. एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ठीक है. This will be major now because यहाँ पे here we are having 2 hydrogens, here we are having 3 hydrogens. This will be major. So you remember. Make sense, everyone? Yes or no, please tell me. Yes. Yes, sir. ठीक. Now you will write a few things. एक तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए note the following reagents. The following reagents can be used for dehydrohalogenation. What are the things? We can use alcoholic KOH, ठीक है, और alcoholic NaOH. Both are the same thing. ठीक है, इधर भी OH नेगेटिव, इधर भी OH नेगेटिव आ रहा है आपके पास. Here then you have RONA in the presence of alcohol. You have alkoxide, sodium alkoxide in the presence of alcohol. C, what you can use is sodium amide, NaNH2. Sodium amide. ठीक है. Another note point in the note you are going to write rate of elimination.
यहाँ पे दो चीज आपको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डिफरेंट halogen atoms, alkyl iodides will be the fastest for in the elimination reaction when compared to RBr, when compared to RCl, when compared to RF. ठीक है. Why is that? Because the carbon iodine bond, it is very weak. iodine बहुत आराम से निकल जाएगा. ठीक है. Another thing is that here the elimination reaction, we have not seen the mechanism here because mechanism आपके syllabus में है नहीं, वो पूछते नहीं. But in this mechanism also what happens is we are having even mechanism. मतलब even नहीं बोल रहे हम बोल रहे even. ठीक है. Elimination unimolecular. ठीक है. तो पहला स्टेप में whenever you have unimolecular reaction, in that what will have, what's going to happen, halogen atom will leave. Once the halogen atom leaves, what you will get a carbocation. अब जब आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा, then what's going to happen, then it is going to depend on the stability of carbocation. ठीक है. So we can say that सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, बेंजाइल है ना. उसके बाद अलाइल which is approximately equal to 3 degree, which is more than 2 degree, which is more than 1 degree. ठीक है. तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन जो होगा बेंजाइल हैलाइड के लिए होगा. बट बेंजाइल हैलाइड इट शुड बी समथिंग दैट इज गोइंग टू हैव अल्फा हाइड्रोजन. अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है then reaction will not happen. ठीक है. Also write one more point. If alpha hydrogen नहीं, my bad, beta hydrogen. If a haloalkene does not contain beta hydrogen, then the beta elimination won't take place. ठीक है. Won't take place. By the way, beta elimination, this elimination reaction is also known as beta elimination because we are going to remove hydrogen from the beta carbon. ठीक है. Beta elimination. Let me know once you're done So for writing the the note. so for the बोलिए. example 12, only two products will be there then. हाँ, correct. Only two products. Okay. Done. Sir, do we check the halogen or the benzyl or amine first? It depends ना. अगर आपके पास see like अगर सवाल में आएगा ना, like give the order of reaction, then either the halogen will be same or the alkyl group will be same. ठीक है. If the alkyl group is same, halogens are different, then you will compare for halogens. If the halogen is same and the alkyl groups are different, that means benzyl allyl वगैरह है, फिर benzyl allyl का देखेंगे. ठीक है. They will never mix it. क्या अच्छा. Okay. Done. Yes, sir. Yes, sir. Now there is a very important question that is in this particular topic. Please write. Reaction, ये फिर से Y type of question. ठीक है. Reaction with aqueous KOH gives aqueous KOH किसके साथ, with alkyl halide RX gives alcohol, but reaction with alcoholic KOH gives alkene. Explain. You have to explain this part. I am going to write the answer. ठीक है. आप उस चीज को लिखिएगा, then I will explain it completely. ठीक है. चलिए तो write with me. I don't know why my hand is paining if I'm with the pen. So I'm going to type it. In alcoholic
KOH. Alkoxide ion acts as base due to its larger size. Due to its larger size and shows beta elimination and shows beta elimination forming alkene. ठीक है, forming alkene. But in aqueous KOH, hydroxide ion acts as nucleophile due to its smaller size and attacks on carbon atom showing SN, है ना, N लोअर केस वाला कर, लोअर केस नहीं सबस्क्रिप्ट में कर लीजिएगा, forming alcohol. ठीक है, तो this is the statement that you have to write in the examination. कि alcoholic KOH में it acts as a base. ठीक है, बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन पे लेके जाना, तो हाइड्रोजन को लेके जाता है. And in aqueous KOH, hydroxide ion, it acts as what? Nucleophile. Nucleophile का काम क्या होता है? To attack on carbon atom. तो वो carbon atom में काम करता है. The difference is alkoxide ion is a base और वहाँ पे hydroxide ion रहता है. Alkoxide ion, it is having larger size. That is why it shows beta elimination and it forms alkene. But aqueous KOH, it forms alcohol because of its smaller size. आप लोगों ने लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. नो यस क्या बोल रहा है? Yes, sir. यस ठीक है, अब समझते हैं इसको. ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है? हर्षा डन राइटिंग? Yes, sir. We are going to take a, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे आपके पास Br. ठीक है. Now this is our molecule, इसमें रिएक्शन होना है. As you can see, it is having a, यहाँ पे आपके पास अल्फा कार्बन है. This is the beta carbon, right? So beta carbon is having plenty of hydrogens. Now there are two reagents we are going to do the reaction with. एक है आपके पास alcoholic KOH. ठीक है, तो alcoholic KOH में what is the simplest alcohol we can have? Simplest alcohol जो आप लेंगे ना, it is going to be methanol. Right? Methanol भी कैसा होता है? Carbon atom with 3 hydrogens, right? And you will be having oxygen. Now because of this KOH, that is the base here, what you will see that इसका जो O है, O पे एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है. Why? Because the hydrogen has been taken away by the base. ठीक है, KOH क्या कर रहा है? अल्कोहल का हाइड्रोजन लेके चला गया. So what you have now? You have this as alkoxide ion. Specifically speaking, this is what we have got this from methanol. It is what? Methoxide ion. ठीक है, ये क्या है? Methoxide ion. Next we have aqueous KOH. We have aqueous KOH. Now whether you take water or you take the KOH, in both the cases you will be having an ion that is what? HO negative. Hydroxide ion. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Sir, can you explain again? ठीक है. Which one? Hydroxide या alkoxide? Hydroxide. Hydroxide. You have aqueous, no water. ठीक है, तो water से तो you will be having H2O. Make sense? Yes. Okay. And water से you will be having क्या कर रहे हैं? Water से you will be having H2O. And from KOH you will be having what? KOH से क्या मिलेगा आपको? OH negative. Make sense? Okay, sir. है ना?
OH नेगेटिव Yes, कोई न्यूक्लियोफाइल मानेंगे बिकॉज OH नेगेटिव इज गोइंग टू हैव अ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखते हैं हम लोग। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर बिग कार्बन एटम, देयर आर टू थिंग्स इट कैन डू। या तो आप इसको क्या कीजिए, ये यहाँ पे ऐसे करके इसको इधर अटैक कराइए, ठीक है, और फिर Br निकल जाए बाहर, ओके। और what this particular ion it can do is it can attack on this hydrogen atom and take it. As soon as it is going to take the hydrogen atom, then what's going to happen? Hydrogen को ये कैसे लेगा? It will be what? It will take the hydrogen atom with leaving its electron. इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहा है, ठीक है। What will happen? This one will come down और फिर यहाँ से Br निकल जाएगा, ठीक। There are two pathways for OH negative। देखिए आप रेड वाला जो पाथवे ना, you can see that there will be a lot of steric hindrance because this molecule is also large and इस कार्बन तक अप्रोच करने में the alkoxide will be having some problem. So the easier pathway will be the green pathway. Make sense? Yes or no, please tell me. Yes, sir. But for OH negative, since it is very small in size, it can easily navigate through the carbon atoms and it can attack on the alpha carbon. Makes sense? ठीक है, इस वजह से this is not possible, right? Not possible due to larger size. बात समझ में आई? हर्षा yes, and Rishita? Yes, sir. Write this down. Let me know once you're done. Done, sir. Harsha done? can the aqueous KH won't react with the first carbon? बीटा कार्बन मतलब Yes, sir. देखिए और डिटेल में चलता हूं। Why is OH negative or even the methoxide or the hydroxide, why are they attacking this particular carbon atom? What is the demand? Basically यहाँ पे क्या है ना, this carbon atom, it is going to have delta positive charge. So the best option for both of them, whether it is methoxide or alkoxide ion, is to attack on this carbon atom because it is going to have delta positive. क्यों? Because Br is going to pull electron density and get delta negative. Make sense? ठीक है, Yes, दोनों sir. को अटैक करना चाहिए कहाँ पे? अल्फा पे। बट this alkoxide ion, it cannot attack on what? On the alpha carbon because of the larger size steric hindrance. So it attacks on the next nearest thing, that is hydrogen atom. ठीक है, so it attacks on the hydrogen atom, it takes the hydrogen atom. अब ये क्योंकि it is going to act as a base, O नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज को आसानी से स्टेबलाइज करेगा कौन? H positive. So it takes the H positive and then it is going to do what? It is going to give the electron density here, फिर वहां से Br निकल जाएगा। Make sense what's happening now, Harsha? Yes, sir. ठीक। Thanks, sir. डन राइटिंग? ठीक। देखिए एक होता है डी हैलोजिनेशन, आप कह सकते हैं। It is basically dehydrohalogenation, but in two different steps.
Let us suppose you have something like this. यहाँ पे आपके पास Br है. Here also you have Br. ठीक है. Now you will also be having hydrogens here, ना? एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे आपके पास एक दूसरा हाइड्रोजन. Make sense still here? Yes or no, please tell me. हाँ जी बताएं. Yes. ठीक है. When you use alcoholic KOH, what is going to happen? एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा. So you will be left with, let us suppose, Br here. और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है. And you have a double bond. ठीक है. Next you can see basically ये रिएक्शन तो ऐसे होता नहीं है कि alcoholic KOH डाल दें आप तो फिर ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे. जनरली ऐसा नहीं होता है बिकॉज this alcoholic KOH ना it is going to have negative charge. फिर negative charge वापस से इस पे अटैक करेगा. Then there will be repulsion between pi bond and oxygen atom is quite electronegative so it can handle that negative charge. ठीक है. तो बट आप लोग लिख सकते हैं 2 बार alcoholic KOH. Laboratory में करने जाएंगे then you are not going to get alkene. Reaction stops at what? At alkene. You are not going to get alkyne. Reaction stops at alkene level. So a good base that we are having which can show this type of reaction is sodium amide. Now sodium amide जो होता है we'll have to add 2 equivalents of sodium amide. 2 बार रिएक्शन करने का मतलब 2 equivalents डाल दीजिए. That means for each mole of this haloalkene we have to give 2 moles of sodium amide and you will get an alkene. ठीक है. In alcoholic KOH, O negative is going to have what? The negative charge and it is going to act as a base. O negative is more electronegative, so it can slightly bear the negative charge. बस यहाँ पे क्या होता है? You have N negative as what? Nitrogen atom with negative charge. So nitrogen atom is less electronegative than oxygen atom. That is why वो bear नहीं कर सकता अपना negative charge. It attacks and it forms what? Alkene. Make sense? Yes or no, please tell me. ये वैसे आपको इससे सवाल वाल नहीं आएगा, लेकिन बस एक जगह इस्तेमाल होने वाला है in organic conversions. ठीक है, which is a very huge topic in this particular chapter. वहां पे I will use this reaction. ठीक है, इस वजह से बस लिख लीजिए. डन राइटिंग तो बताइएगा. Yes. अगर लिखिए नेक्स्ट रिएक्शन एलिमिनेशन हो गया. ये एसएन हो गया, इक्विलिब्रियम सब्स्टिट्यूशन. हमारे पास एलिमिनेशन हो गया. तीसरा कौन सा करना है बताइए जरा. व्हाट इज द थर्ड रिएक्शन इन हैलोअल्केन हैलोलीन दैट वी हैव टू सी. बोलो भाई. Reactions with metal. सॉरी व्हाट. जोर से Reactions बोलिएगा with प्लीज. metal. यस वेरी गुड. रिएक्शंस with metal. Number 1 is right. Reaction with magnesium. ठीक है, reaction with magnesium. लिखिएगा. When alkyl halide reacts with magnesium in the presence of dry ether. ड्राई का क्या मतलब है यहाँ पे. ड्राई का क्या Without the मतलब है. presence of water. Yes, correct. Without the presence of water, है ना, pure ether. Then it forms a compound with formula R Mg X called Grignard reagent. ठीक है. Grignard reagent is also something that you are going to see in this chapter, in the next chapter, in the next chapter, in the next chapter. ठीक. सारे चैप्टर्स में आपको Grignard reagent आएगा. पहली बार आपका
तारुफ हो चुका है. You have got introduction from Grignard region. You will see this in the next chapter. चार चैप्टर में. ठीक है. So what is Grignard region basically? यहाँ पे आपके पास है R, Mg, X. ठीक है. इस तरह के मॉलिक्यूल को बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक, जहाँ पे यू हैव ना कार्बन एंड मेटल बॉन्ड. दिस इज कार्बन, ये आपके पास दिस इज ऑर्गेनिक पार्ट बिकॉज इट इज हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव होगा. दिस इज अ मेटल. This type of compound is known as organometallic compound. ठीक है. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. अच्छा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की ना एक खास बात होती है. क्या खास बात होती है? उसके लिए आपसे हम पूछेंगे कोई एग्जांपल दीजिए तो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिशिता, अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन के अलावा जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ, फंक्शनल ग्रुप कुछ भी जुड़ा हुआ. यस रिशिता, बोलो भाई, एक एग्जांपल दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का. प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल. कुछ और दीजिए हर्षा, अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल. जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है आजकल. Propanol. ये हर्षा. प्रोपेनोन. Yes. ठीक है. प्रोपेनॉन में यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड. आई होप यू नो, बिकॉज अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे तो फिर ये एल्डिहाइड हो जाएगा. इट विल नॉट बी कीटोन. ठीक है. नाउ आई हैव जस्ट टेकन टू एग्जांपल्स जो कि आपने कहा है, बट इफ यू थिंक ऑफ एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच इज गोइंग टू हैव which is going to have some functional group on it, तो वहाँ पे always, can say always, generally बोलना चाहिए, but I can say always is that this carbon atom will be having delta positive charge. Even this carbon atom will be having delta positive charge. Make sense? Yes or no? Correct है? Yes. Yes, sir. But even if I have na Rx, अगर हमारे पास haloalkane भी होता, then this is carbon atom. This R will be having a delta positive charge because halogen atom is pulling the electron density. But in organometallic compound we have metal, and metal की tendency क्या होती है? Electron lose, electron gain. Electron lose. Lose करें, right? Very good. So ये क्या करेगा? Electron देगा, and obviously carbon atom is more electronegative than any metal atom, and this will have delta negative charge now. ठीक है. तो ऐसे देख रहे हैं आप, alkyl halide में क्या था? Delta positive. And now once we have done the reaction, we have got RMGX. What we are having delta negative in what the alkyl group or the carbon atom. ठीक है. तो इस तरह के रिएक्शन में जहां पे, ध्यान सुनिएगा, the reaction in which polarity of carbon atom changes, those reactions are known as Umplong reaction. ठीक है. Umplong. आपके सिलेबस में है नहीं इस तरह की, बट दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन. कि ग्रिग्नार्ड रीजन बार बार क्यों आ रहा है इतना. ठीक है. तो ये खास मॉलिक्यूल है जहां पे कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है. नाउ दिस कार्बन एटम कैन अटैक ऑन अनदर कार्बन एटम जिसके पास फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड O. ठीक है ना. यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा. अब आपके पास जो RMGX वाला R नेगेटिव है वो आके यहाँ पे अटैक करेगा. बात समझ में आ रही है? यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes. बोलो भाई. ठीक. चलिए, तो रिएक्शन क्या था आपका? रिएक्शन है आपके पास RX plus Mg will give you RMGX. ठीक है. अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं. 1 2 3 Br plus Mg going to give 1 2 3 Br की जगह Mg Br. ठीक है. उसके बाद लेट अस सपोज इफ यू हैव इवन बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है प्लस Mg, then this is also going to give you. अच्छा, बाय द वे यहाँ पे ना एरो में ड्राई ईथर लिख लीजिएगा आप लोग. DE कर लीजिए ना. Just to remind you guys, DE, that is you are having dry ether. So dry ether is also going to have a question कि dry ether क्यों use करते वगैरह. ठीक है. MgCl. Now the name of this is R के लिए जो भी है alkyl, whatever alkyl group you are having, तो वो लिखिएगा alkyl magnesium. ठीक है. halide. So the alkyl group in this case is 3 carbon atom, that is propyne, magnesium, Br के लिए bromide. Here the R group is phenyl, magnesium. थोड़ा स्पेलिंग कुछ गलती होगा तो आप देख लीजिएगा. ठीक है. magnesium chloride. Make sense, Harsha and Rishita? So no, please tell me. Yes. Yes, sir. इसके बाद you will write a question.
Why is GR Grignard reagent always prepared in anhydrous condition? Anhydrous condition, ठीक है, पानी के अलावा, है ना, पानी क्यों नहीं दिया जाता है? So the reason is, reason देख लीजिए पहले. For example, it is suppose you have CH3Br reacting this with Mg, form a Grignard reagent. So you will get CH3Mg Br. But if there is water somewhere, अगर पानी होगा तो पानी will be something like this, HOH, where this H will be having delta positive, अब इधर delta negative मान सकते हैं. और this carbon atom is also having what, delta negative. So this carbon atom will attack on the hydrogen of water, and as soon as it attacks on the hydrogen of water, CH3 में 3 हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन मिल गया, क्या बन गया, CH4 प्लस यू विल हैव MgBrOH. ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is very reactive in nature, is very reactive in nature, due to which. So in the question, what is it? Why is GR? Grignard reagent, GR. Oh yeah. ओके, GR Grignard reagent, वो हम लिख रहे हैं भाई, आप लोग को पूरा लिखना है. Due to which it reacts with it reacts even with, कर लीजिए, even with moisture and forms alkene. आपको चाहिए था ये, बट ये तो रिएक्ट करके क्या बना दिया, एल्केन बना दिया. तो फिर पानी नहीं रहना चाहिए ना, पानी था तभी तो एल्केन बन गया, पानी नहीं रहता तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तक रिएक्शन रुक जाती है ना, आगे कोई और रिएक्शन नहीं होता. आई बात समझ में? यस और नो प्लीज टेल मी. Yes. Sir, is this the last topic of the lesson? वही तक गया, चली जा रहा है, चली जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा. आरशा, Yes, sir. हाँ तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लगेगा, टाइम लगेगा. वैसे हो गया खत्म, समझ लीजिए ऑलमोस्ट. एक और जिसमें यू विल बी डूइंग रिएक्शंस ऑफ हैलोरीन. हैलोरीन कहाँ देखा अभी तक? सो यू विल हैव वन मोर क्लास ऑन